इनके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी, तो इन्होंने 3 चीजें मुझे सिखाई, या मुझे इनके साथ 3 चीजों को सीखने का मौका मिला। सबसे पहले एनएलपी के बहुत सारे टूल्स जो इन्होंने मुझे सिखाए, और जब मैंने वो इम्प्लीमेंट किया तो मेरी जिंदगी में बहुत क्विकली, बहुत ही तेजी से तब्दीली आने लग गई। फिर मैं इनके साथ और जुड़ा, और इनके साथ लाइफ कोचिंग के मुझे इंडिविजुअल और ग्रुप में सेशंस लेने का मौका मिला। फिर मैं इनके साथ ट्रेनर्स ट्रेनिंग के अंदर शामिल हुआ, जहां इन्होंने मुझे ट्रेनर बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का मुझे इनके साथ इत्तेफाक हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो आज यकीनन बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वो 3 टूल कि जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक बहुत ही अंधेरे से निकालकर रोशनी की जानिब गामजन किया, कामरान सर की बदौलत। तो कामरान सर, मैं आज आपसे अपने तमाम ऑडियंस की हेल्प के लिए भी, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ सवालात आपसे प्रिपेयर किए हैं, और आपके जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत सारे सवाल मुझे भेजे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सर बताइए कि लाइफ कोचिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों फील्ड के बारे में अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। Okay, so जैसे हम लोगों ने ग्रुप में भी पूछा था, कई लोग इसी इसमें लाइक कोचिंग एंड these are two different things, but दोनों की आपस में इंटीग्रेशन भी है। कोचिंग बिल्कुल आसान लफ्जों में इट्स लाइक हेल्पिंग पीपल। कोई शख्स है आपके पास आता है, वो अपनी कोई एक सलाहियत है या अपना उसका कोई एक मसला है, उसको सॉल्व करना चाहता है। तो उसके लिए जब आप उसके साथ इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते हैं और you help them get from where they are to where they want to be in their life, personally, professionally, financially, in their relationships, in their health, in their parenting, whatever area of their life may be. So उस वक्त आप कोचिंग करते हैं। ट्रेनिंग की जब बात होती है, ट्रेनिंग अब सो फॉर एग्जांपल अगर फर्ज कीजिए कि मैं एनएलपी की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, या मैं पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, या मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग करा रहा हूँ। सो आई हैव अ डिजाइन्ड कोर्स and it is for everyone in the group. I cannot customize it for one specific student in class. So जो कोर्स होगा, जब ट्रेनिंग हो रही होती है, तो वो ट्रेनिंग हर स्टूडेंट के लिए इक्वल होती है, वो स्पेसिफिक नहीं होती। दिस इज लाइक जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट आप कोई पढ़ रहे हैं, तो उसका एक सब्जेक्ट का एक बनाया सिलेबस है, और टीचर उस पूरा सिलेबस जो है सब बच्चों को वही कराता है, उसी के ऊपर सबकी इवैल्यूएशन होती है। सो ट्रेनिंग इज लाइक दैट, सो इट्स लाइक फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट द सेम थिंग। एंड वहां पर यू आर वन पर्सन मेनली कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, okay, and helping them understand theories, helping them understand the concepts, and helping them develop some skills. Coaching, on the other hand, is helping one person at a time, even if you are working in a group setting. So for example, I do group coaching sessions every week. So I have sessions for men on Monday, I have sessions for women on Thursdays, but I work with one person at a time. हर ग्रुप में आने वाला अपने अपने इंडिविजुअल इश्यूज लेकर आता है, अपने अपने चैलेंजेस लेकर आता है, and then we work on one person at a time. So coaching is more focused, and it is more designed, it is customized for the individual in front of you. Okay. And training is general, which can be for a group of people and with a specific agenda. Coaching doesn't have an agenda. Coaching may, the client, the coachee brings the agenda. Okay, so for example, when you're working as a coach, you don't know आज आपके पास आने वाला जो client है वो क्या issue लेकर आएगा. You just have an appointment with someone and they may have told you okay, I want to work on my career, and you are like thinking in terms of helping them with their career, and they come, and just before they come they had a fight with their wife, and then now they want to work on their relationships. Okay, so and it happens a lot of times कि उसने जब आपसे सिमिलरली उसने आपसे जब टाइम लिया था, तो वो जिस इशू के लिए टाइम लिया था, लेट्स से एक हफ्ता पहले उसने टाइम लिया था, वो इशू फॉर सम रीजन उसका रिजॉल्व हो गया, और समथिंग एल्स, समथिंग बिगर हैज कम अप. सो व्हेन दे कम, यू डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू बी. सो इसलिए हम कोचिंग के जो सेशंस होते हैं हम कहते हैं कोचिंग कॉन्वर्सेशन.
आप जब कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, सो यू डोंट नो ये कॉन्वर्जेशन कहाँ होगी. नाउ एक पॉइंट यहाँ पे मैं और बता दूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्वर्जेशन की, बहुत सारे लोग आजकल जी मैं अपने भाई से बात कर सकता हूँ, अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ. द फैक्ट इज भाई और दोस्त तो हमें मेडिकल के भी मशवरे देते रहते हैं. अगर इस तरह से हमारे घरों के अंदर होता तो फिर सब लोग, कोई बीमार भी नहीं होता, सारे मसले हल हो जाते. इट्स लाइक हमारे पास दुनिया के हर मसले का हल है सिवाय अपने. कोचिंग में, even though it's random, but you're systematic when you're going through that conversation. Yeah. And as a coach, when you work with people, by the way, before I answer this one, how many of you here have this experience that people, even people close to you, don't really understand you? Type number one if you experience this, and be open about this. Sometimes even you find like your mother doesn't understand you. Okay, now there's a difference between people knowing your preferences and you knowing their preferences. It's like इनको ये रंग अच्छा लगता है, उनको वो रंग अच्छा लगता है, इनको ये खाना अच्छा लगता है, वो खाना. These are preferences. Yeah. Who you truly are from inside and what you truly are from inside. Do they really know that? If no, then type one. And similarly, when it comes to people in your life, I've worked with, I don't know how many couples over the last 25, 26 years now. And बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोचिंग सेशन में हस्बैंड आए, उन्होंने कहा जी ये मेरी वाइफ है, इनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. एंड देन आई आस्क्ड द हस्बैंड, हाउ डू यू नो इनके साथ ये प्रॉब्लम है? मेरी बीवी है, हमारी शादी को 20 साल हो गए, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से. एंड आई आस्क्ड वाइफ, सही कह रहे हैं ये? और वाइफ का रिस्पॉन्स आपको पता है क्या होता है? ये मुझे आज तक नहीं समझे. And I've heard this many times. 20 years, husband believes, he thinks he knows his wife. And wife has this, he doesn't understand me. By the way, same thing has happened with, women, telling me what's wrong with their husbands, and husband saying, ये मुझे आज तक नहीं समझी. How come? अल्लाह ताला ने जिसको हमारा लिबास का है, वो हमें नहीं समझ रहा. Why is that? And we think कि हम उसके साथ बात करेंगे तो वो हमारे मसलों को हल निकलें. वो हमें हमारे मसले का हल नहीं बता रहे होते हैं, वो अपनी परसेप्शंस के मुताबिक हमें डील कर रहे होते हैं. ओके, उनकी एक परसेप्शन बनी हुई है हमारे बारे में, उस परसेप्शन के मुताबिक वो हमें कि हम इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं तो लिहाजा इनको यूं कर दिया जाए. ओके, एंड समटाइम्स दे मुझे चीयर अप यार, चलो खुश हो जाओ, यूं जाओ. That's what they are trying to do with us. How many of you can relate to this? How does this make sense जो बात मैं कह रहा हूँ? Type 2 if it makes sense. Okay, and I use digits so it's easier आपको type करने में if you type yes or no. Okay, so coaching. So I see number of twos here. So there's coaching जो होती है. Coaching, when you work with people, you understand them deeply. You connect with them deeply. You find out what's happening in this person's mind, actually what's happening in their mind. Right. So मैंने जैसे group में भी, and this is one of the things I keep telling my coaching clients, I keep telling my students when I'm working with them, be brutally honest. So your friend, when you share a problem with them, or a family member, when you share a problem with them, they may not be brutally honest with you. Okay, they may tell you things which they think you want to hear, like a motivational speaker. Okay, a coach, a good coach, a skilled coach will tell you what you need to hear, and that's what makes the difference. Okay, so if you have a friend who openly, bluntly tells you that you are wrong and what you're doing is wrong, and do it with total sincerity, okay, that friend can be kind of a coach for you. He may not be skilled, but that's one of the basic things that a coach has.
Okay, so coach works individually with people, while a trainer works with a group of people all at the same time. Coach doesn't have any specific agenda. A trainer has a specific agenda. A coach doesn't have specific curriculum for a conversation, but has systematic approach for a conversation, while a trainer has a specific curriculum. So these are some major, bigger differences. Okay, Right. I hope that answers that question. So Okay. इसमें सर एक चीज ऐड करें, what is NLP coach? So NLP is a tool. Hypnosis is a tool. Okay, I have trained in NLP. I've trained in hypnosis. I've trained in strategic intervention. These are all different tools. Okay, so मेरे पास कोई, when I'm working with people, it allows to make it very simple. एक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है, उस मरीज को किसी एक मरीज को डॉक्टर गोली दे देता है, एक मरीज को कोई कैप्सूल देता है, एक मरीज को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक मरीज को डॉक्टर ड्रिप चढ़ाता है, और एक मरीज को डॉक्टर ऑपरेशन रिकमेंड करता है. बज़ाहिर उनके दर्द जो है वो सब यही कह रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, और लेकिन सबका जो इलाज है डॉक्टर ने डिफरेंट चीजें की. सो डॉक्टर के पास डिफरेंट टूल्स हैं ये. सो दवा देना, डॉक्टर को पता है किसको दवा की जरूरत है, किसको इंजेक्शन की जरूरत है, किसको ड्रिप चढ़ाने की जरूरत है. सो these are different tools that doctor has. He has skills in injection lagane mein. He has skills in let's say क्या कहते हैं उसको ड्रिप चढ़ाने में. He has skills on number of things. As a coach, NLP is only a tool that you use. It's a means towards an end. So जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, and when a person comes to you and they are sharing, they have some big goals they want to achieve, but you find they don't have a lot of clarity, and that's a very common thing. Okay, one of the biggest problems I see with people is they have weird ideas and ideas which are totally vague. कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं. कुछ करना is very vague. Okay, so when you're working with people, so you help them get more specific. So exactly क्या करना चाहते हैं. मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे. Okay, कितनी बढ़ाना चाहते हैं, अभी इनकम कितनी है, जहां पर है इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, इस नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए आपने क्या करना होगा, आप अगले महीने में के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं. So when you're working with people, you use NLP as a tool. फर्स्ट करो मेरे पास कोई शख्स आता है who has some issues, जिसके लिए I find कि इसके लिए hypnosis would be useful. In a coaching conversation, in a coaching session, I may use hypnosis. So hypnosis is a tool. Right. So I may not teach him hypnosis or NLP, but use some of the things. And then NLP, Ramzan, it's such a huge training. जो हमारी जो basic course है NLP का, that's over 60 hours training. Even home study, it's more than 60 hours. जो live program होता है, it's more than 70 hours training. 60 hours home study में, because उसके अंदर recording में breaks नहीं है. जो NLP advanced course होता है, master practitioner training, that's more than 90 hours training. So जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो out of those tools that you've learned, you apply whatever would be most appropriate for the person. NLP, in terms of coaching, जब कोई coach NLP को use कर रहा हो, so we call that NLP coach. मेरे जितनी भी programs होते हैं, whatever I do, I use NLP. Okay, so every single sentence I speak, including this one, every single sentence. Those of you who are my NLP trained students, tell me what have I just used? Every single statement I use has NLP in it. Generalized. Okay, so NLP is everywhere. Yes, sir, right. Yeah. So my next question is कि क्या हर कोई कोच बन सकता है सर? No. Nothing is for everyone. Okay. किसी भी चीज में सबसे पहली जो चीज होती है ना, is you need lots of patience. चाहे आप कोच बनना चाहते हैं या ट्रेनर बनना चाहते हैं, you need lots of patience. If you don't have patience,
don't think about becoming a coach. Okay, if you if you don't have patience and you cannot be brutally honest, this field is not for you. You have to have a lot and lots and lots of patience, then a lot of hard work. If you are not the person who works hard and not willing to work hard, this is not the field. Coaching, training is not for you if you are not a hard worker, if you're not willing to give your best. You will frustrate yourself if you don't, if you just join in and you invest your time and money and you're not doing it with total determination. This will be a disastrous idea. Okay, so coaching ke liye, you have to have a lot of patience. To become a trainer, you have to have a lot of patience. It has to be in you. You have to be really solid in you. And there are a number of other qualities. You need to be persistent. You can't just say, अच्छा चलो मैं Facebook live एक कर लेता हूँ आज महीने में एक बार करने के बाद, या मैं अपनी एक वीडियो बना लेता हूँ, या मैं एक सेशन कर लेता हूँ उसके बाद फिर बैठ जाए. It doesn't work that way. Okay, you have to be persistent. You have to be consistent. You have to be willing to learn on regular basis. Right. Consistently, you have to learn, because नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया में नए किस्म के चैलेंजेस आते हैं. आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, they don't have time to do their research. They don't have time to study. Okay, you as a coach need to do that. मैं अभी तक this is अब मेरा टाइम कम हो गया है, okay? लेकिन still मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रोजाना कुछ ना कुछ सुनता हूं या पढ़ता हूं on various different topics. Okay, for me literally it has become an addiction. If I don't do it, I feel like there's something missing, but I have to do it if I want to really do raise my level up. I have to do it. So if you want to become a coach, you want to become a trainer, and you're not consistent, you're not persistent, अगर आप सुस्ती में हैं, अगर आप मेहनत करने का आपका इरादा नहीं है, these fields are not for those people. Okay, these are some traits that everyone needs. There are several others. अभी इतना टाइम नहीं है कि इसमें जाए. मेरी अभी रमजान से 2 दिन पहले बात हो रही थी. I was just answering Ramzan some of his questions. I was telling him there's a lot, and Ramzan is already experiencing that. Okay. So कामरान सर, आपने जिन क्वालिटीज की बात की, जिस तरह लाइफ कोचिंग या ट्रेनर बनने के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत है, अगर ये क्वालिटीज का लेक है, किसी में कमी है, किसी में खामी है, मगर वो चाहता है कि वो इसको बिल्ड करे, तो क्या ये क्वालिटीज इंसान बिल्ड करके कोच बन सकता है? Yes, अगर विलिंगनेस है तो. Okay, अगर विलिंगनेस है and a person wants to, yes, of course. It's like कोई भी शख्स कोई भी क्वालिटी डेवलप कर सकता है. बात यह है कि वो क्वालिटी इंसान में है. हम एनएलपी में एक बात क्या कहते हैं, एनएलपी का एक जो बेसिक प्रीसपोजिशंस है, that every resource a person needs is already in the person. वो एक्टिवेट हुआ नहीं है. क्वालिटी है, मगर वो क्वालिटी को अगर यूज करने की उसमें विलिंगनेस नहीं है, so nothing doing. Okay, so you have to have that willingness. And this is, by the way, this is what I mean by being brutally honest. I am telling you brutally, if you don't have these qualities, forget about getting into this. Don't waste. Go find a job for yourself. Do something that suits you. Yeah. Otherwise, this will be a disastrous idea for you. If you're someone who thinks कि मैंने एक फलाना course कर लिया and now I have a certificate, now I'm qualified, forget it. Forget it. Okay, this is not about doing a course. This is not about getting a certificate. Many I've taken many courses, and so this is just to give you an idea. These are some of the certificates, not all of the certificates of the courses that I've attended. I did not say 26 years ago, oh, I have a certificate. Okay,
I have attended more trainings जिसका मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है then trainings जिनके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं. I have attended, honestly मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी ऐसी ट्रेनिंग्स, इतने सेशंस, इतने कोर्सेज अटेंड किए जिनका मैंने कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लिया, because I'm not interested in certificates. Okay, लेकिन you know, it's that skill. Not a single person ever in my 26 years of life as a professional coach, not a single person ever has asked me about my certificates. Because when people come to you, you know, if you're working as a coach, when they come to you, they ask about if you can help them solve the problems they have. With all of your certificates, if you can't solve, forget it. Right, sir. Okay. So understand these things. ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं, and they become big issues for people. Right. सर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, प्लीज को जरा क्लियर करें कि लोग कहते हैं कि भाई जो कोच होता है उसकी जिंदगी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपने स्पाउसेस के साथ है या वो पेरेंट है अपनी फैमिली के साथ है. तो आप भी कोच हैं, क्या मुझे बताएं सर, आपने हजारों लोगों को कोच किया, आपकी जिंदगी परफेक्ट है क्या? Yes, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम होती क्या चीज है? Is there anything perfect in this world? How is that even possible? This is a thought, by the way, that stops a lot of people from taking action in their life. Even मेरे पास आने वाले मेरे students जो हैं, this is one of the things, you know, if you remember Ramzan, when I'm training, let me share with you quickly something that may help you. Okay, just so bear with me, hold for a moment. So, see, life coach बनने के लिए, what you basically need is, okay, these are the things that you need. The first thing is you need a right mindset. Okay, if a person doesn't have the right mindset, okay, they're not going to survive. For any field, by the way, हर फील्ड में आने के लिए, किसी भी आप कोई भी काम करते हैं, you have to have the mindset that is required for that field. अगर कोई शख्स एक ग्रोसरी स्टोर खोलता है, उस ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए. ओके, अगर आपका माइंडसेट जॉब का है और आप बिजनेस में आते हैं, या आपका माइंडसेट बिजनेस का है और आप जॉब में जाते हैं, योर माइंडसेट, if it doesn't adjust, you know, you will get into trouble. So the first thing that you have to have is the right mindset. So coach का जो mindset होता है, उसके जो elements होते हैं, इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा इस वक्त. Okay, but this is where my NLP coach certification training starts. So I'll just quickly give you a glimpse on that. दूसरी जो चीज होती है, that's skill set. Now you have the right mindset. Okay, you are totally honest, you are brutally honest, you know, you are willing to help people, you have everything, but you don't know how to do it. If you don't have the skills, you'll not be able to do anything. On the other hand, if you have all the skills but you don't have the mindset, you know how to do but you're not willing to do, you know what to do, when to do,
but you don't have the kind of mindset required to do. It will not. It has to have both. Okay. देखो कोई भी खाना बनाते हैं ना, इस मेरे जहन में भी ख्याल आया एकदम से, जैसे इवन आप रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए खाली आटा नहीं चाहिए होता, उसमें पानी भी चाहिए होता है, उसमें नमक भी चाहिए होता है. Okay, so and then you have to have a certain temperature पे तवा आपका गर्म होना चाहिए ताकि आपकी रोटी प्रॉपर बन सके. अगर इनमें से एक एलिमेंट भी मिसिंग होता है, आपकी रोटी आपकी प्रॉपर नहीं. Okay, so if you want, when you're working as a life coach, you need the right mindset, you need the right skill set, and the third thing that you need is a good business strategy. Because remember, training ho ya coaching ho, these are businesses. Okay, I have built my career on this. मैंने इस वक्त स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में किसी को इन चीजों का अलिफ बे भी नहीं. लिटरली इतने लोग थे NLP को जानते हैं जिनको आप you can count on your fingers. लेकिन it's like now सोशल मीडिया था ना, कोई और चीजें थी, बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की चीजें थी हमारी मार्केटिंग की. बट you need a good business strategy. So you have a good mindset, you have the good skill set, you have trained and you know everything, but you don't know how to create clients. Right. Okay. फिर लोग कहते हैं सर कोचिंग तो मैंने की हुई है मगर मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आते. मेरे पास फ्री वाले क्लाइंट्स तो आते हैं, पेड वाले नहीं आते. That's because you don't have a business strategy. Because you never learned it. So you have to have all of these. These are the like elements, and within these elements there are lots of things. हम उस पे भी जाएंगे तो फिर हमारा सेशन सारा इसी पे निकल जाएगा. ये एक स्लाइड है ना हमारी, 3 घंटे निकल जाएंगे इसमें. But you have to have all of these. So yes, Kamran sir, अगर mindset भी है, स्किल सेट भी है, बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है, मगर अगर उस शख्स के लेट्स सपोज कि रिलेशनशिप ब्रोक हुए हैं, तो क्या वो किसी और को रिलेशनशिप्स के लिए कोच कर सकता है? Absolutely, most certainly, because it's not about having a perfect life. Okay, I'm sorry, I skipped your question actually. So you don't have to have perfect life, because coaching, here's another thing I keep reminding my students. Your coaching is for your client, not for you. When you're working with people, think about this. क्या अगर एक डॉक्टर है, उसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और उसके पास एक पेशेंट आता है, तो क्योंकि डॉक्टर के अपने दांत में कीड़ा है तो वो पेशेंट की रूट कनाल नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर. पेशेंट को डॉक्टर को रूट कनाल करना आना चाहिए, उसके दांत क्लीन होने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली रूट कनाल करना वो स्किल्स होनी चाहिए उसमें. दैट्स इट. अब वो डॉक्टर बोले मैं कैसे करूं रूट कनाल, मेरे तो अपने दांत में ही खुद ही कीड़ा है. Okay, think about this. It's like अगर फर्स्ट कोई हार्ट सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है. Yeah. So should he not work because he has heart issues? He is not qualified to help people. I mean, does the world work that way? It's like, why do you bring this idea in coaching? This is where mindset comes. Do you understand? Yeah. ये जो चीज़ है, ये mindset का element. Because with wrong mindset, if you're becoming a coach with the wrong mindset, the mindset is I do not have a perfect life. मेरी तो अपनी divorce हुई नहीं है, मैं कैसे लोगों की relationship की coaching करूं? Cool, great. This is like मेरे अपने दांत में कीड़ा है, मैं किसी का दांत में कैसे करूं? सर असलम बाचा साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि कोई बार्बर है, उसके बाल नहीं है. Yeah, exactly. रमजान, I'm sorry, आपके लिए कोई potential नहीं है बार्बर बनने का. Great, sir. So this is all about, the first thing is about mindset. This is why when I'm teaching people, okay, whether I'm teaching people to become coaches in all of my courses, the first thing I work on is your mindset. Yeah. Skills बाद की चीज है, जब तक mindset नहीं है, forget it.
Right. Okay. Right. आप लोगों के लिए quickly, Ramzan, I know you have a question. We may go slightly longer, but I just want to show you some of those elements of those mindset. Okay. Sure. You need to have the right attitude. This is these are the ABCs. You need to have correct beliefs. You need to believe yourself. You need to believe on what you're doing. You need to believe on coaching. If you don't believe on coaching, now, so for example, when I say you don't believe on coaching, I have come across many people who are coaches. And if I ask them, who's your coach? मेरी यहाँ पे अमेरिका में एक साहब से मुलाकात हुई. मैंने कोचिंग सर्टिफिकेशन पता नहीं ICF से कहाँ से कोचिंग सर्टिफिकेशन. Congratulations, बारह जबरदस्त. And I said, who's your coach? And then he said, अच्छा, so do I have to have a coach as well? Excellent. And he was asking me, it's like, मेरे पास paid clients नहीं आते हैं. I said, sure. Yeah, you're selling something that you're not buying yourself. Okay. You're selling something that you're not buying. You're telling people to buy something which you don't buy yourself. And you say, ये बहुत अच्छा है, इसको करें, कोचिंग करें, बड़ी अच्छी चीज होती है. वो पूछे आपने किया, कुछ साहब कभी मैंने नहीं किया, आप करें. Okay. You'll never be able to sell. ये जो चीज मैंने it's like I shared a couple of insights with people हमारे group में. This is one of the major issues that I see a lot of people have. Right. Okay. And why wouldn't they not have coaching? Why wouldn't they hire coach? Because they don't believe on it. Do you understand? This is what it's belief के बहुत सारे elements. But if they don't have this belief that coaching is something worth investing in, they'll not hire a coach. And when they are not investing themselves in coaching, in improving themselves, and then they're complaining, जी मेरे पास लोग नहीं आते. पता नहीं सर, समझ में नहीं आता. Okay? मैंने YouTube से बहुत सीख लिया है. मैंने Udemy के courses करके सीख लिया है. Yeah, it's like you invested $7, you will get $7 clients. It's that simple. It's very simple. There's no question about that. Right. Okay. मैं देखता हूँ कभी आपने देखा है वो Facebook पे, I don't know, वो कहीं पे आती है. अब वो दिखाएंगे एक जी, ये देखिए ये ब्रांडेड जूता है और ये मैंने वही उसी बिल्कुल वैसा ही जूता, ये $300 का जूता है, ये $15 का जूता है. ये $300 की शर्ट है, ये $30 की शर्ट है. ये $250 की पतलून है, ये $25 की पतलून है. देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती. They are not. They are not. There is a difference. There's a difference when you buy an Apple iPhone and when you buy a Chinese mobile. There's a difference, and you know it. Okay. Right. Don't lie to yourself. Please don't lie to yourself. And that's what a lot of people do. They invest in those, ये भी तो वही है. No, you know that it's not. और फिर लोग उस किस्म की चीजें लेके आते हैं. ये देखें जी, टाइम तो इस घड़ी के अंदर भी पता चल जाता है. इससे आपका टाइम पता चलता है. किसी ने बड़ी अच्छी बात की. ये महंगी घड़ी में जो मैं इसमें भी इतना ही टाइम पता चलता है, इसमें भी. महंगी घड़ी से आपका टाइम पता चलता है, आपका क्या टाइम चल रहा है. So my next question, sir, कि अगर कोई शख्स कोच बन चुका है, लाइफ कोच बन चुका है और अभी अपनी वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाहता है, किन रिसोर्सेज और किस चीजों की जरूरत होती है सर? कोचिंग में देखो, आज सबसे जो इस दौर की एक बहुत खूबसूरत चीज है. मैं आपको अपना पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊं. जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 1998 की बात है. So 98, 97, honestly मुझे अभी याद नहीं, I get confused, but it was 97 exactly. So when I started, मैं जॉब करता था, and I made some mistakes, by the way. मैं उस पे भी टाइम नहीं है कि बात करूं, but I just left my job and I started. और मैं पहला दिन था, मुझे याद है, जॉब के बाद मैं सुबह उठ के मैं एक आदत बनी हुई थी हमारी
It's like 8-9 साल मैंने सेल्स की जॉब की थी, एंड it's like रोजाना सुबह उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जमाने में शेव भी करते थे, टाई शाई लगा के नाश्ता करके ऑफिस पहुंच जाते थे। अब मैं जब फर्स्ट उठा ना, तो मैं वाज लाइक लुकिंग, कहाँ जाऊं, कोई ऑफिस भी नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, सो अनकंफर्टेबल, एंड आई थॉट आई नीड एन ऑफिस। और उस जमाने में हम घर से काम करने का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस जमाने में हमें ऑफिस की जरूरत होती थी। फिर ऑफिस के लिए आपको एक अलग फोन लाइन भी चाहिए होती है, पीटीसीएल की रिक्वेस्ट की जाया करती थी, उम्मीद की जाती थी कि चंद महीने में आपके पास टेलीफोन की लाइन आ जाएगी। फिर बाद में मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए थे, मोबाइल फोन शुरू में बहुत एक्सपेंसिव होते थे। आज के जमाने में the world has changed entirely. To work as a coach, all you need is a mobile phone and a good internet connection. That's it. You need a good mobile phone and a good internet connection. That's all you need. And if you want to work as a trainer, you may need a laptop or a desktop computer. Wonderful, sir. Okay. Now, you don't need an office. You don't need a website either. Okay, a lot of times people waste their time in designing a website and a logo, and it's like in the beginning when you're starting, you don't need any of that. A lot of times people say, sir आप बताएं जी मैं आप जो कर रहे हैं ना, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे 26 साल हो गए. Okay, and I'm at a different stage in my learning curve and in my business, in my profession, than where you are starting. So when you are starting, you don't need those things today. Right, sir. Okay. कहीं भी हो सकती है कोचिंग, सर. Right. कहीं भी हो सकती है. रमजान आप कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ सर. कहाँ से कर रहे हैं रमजान आप? मोबाइल, ओनली मोबाइल, सर. That's it. और अगर कभी कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इन पर्सन चाहिए, तो मैं किसी पार्क में बुला लेता हूँ, सर, किसी रेस्टोरेंट में बुला लेता हूँ. Yeah, exactly. Okay, it's that simple. Sure. सर, कुछ लोगों के यहाँ भी सवाल है कि कोच बनने के लिए या ट्रेनर बनने के लिए क्वालिफिकेशन और एज की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? देखो, क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका मतलब है, एटलीस्ट मेरे ख्याल में उसको इंटर और ग्रेजुएट वाली चीज होनी चाहिए. एंड मैं इंटर ग्रेजुएट, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, ओके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, and when I say majority, I mean more than 90%, they don't really study. And they don't really study to learn. Those who study, they study to pass an exam. Okay, a lot of people just want to pass, वो cheating करके pass होते हैं तो उससे हो जाए. Okay, so they are not, in the sense, even if a person is a graduate, so they are in a sense not really qualified. Okay, so लेकिन कोचिंग में आपको ग्रेजुएट होने का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई ग्रेजुएशन चाहिए. You need a correct mindset, or the reason I'm saying a graduate is कि इतना आदमी में manners हो, how you carry yourself. अगर किसी ने मास्टर्स भी किया हुआ है लेकिन उसको अपने आप को कैरी करना नहीं आता, तो वो क्वालिफाइड नहीं है मेरे ख्याल में. ओके, और अगर कोई मेट्रिक है but that person knows how to carry himself or herself, that's perfect. Because what you need is coaching skills, not your educational qualifications. Okay, लेकिन उन skills में कुछ basics जो होती हैं, वो बहरहाल आपको वो चाहिए होती है. आप कोई भी काम करते हैं, it's like अगर जैसे मैंने कहा, अगर फर्ज करो कि कोई ग्रोसरी स्टोर भी खोल रहा है, बट ग्रोसरी स्टोर खोल रहा है बट उसको लोगों से बात करने का तमीज नहीं है, लोगों के साथ बदतमीजी करता है, उसका ग्रोसरी स्टोर नहीं चलेगा. राइट सर, क्लियर. सो एक और चीज बताइए सर, कि अगर कोई कोच बन जाता है और ट्रेनर बन जाता है या एनएलपी का प्रैक्टिशनर बन जाता है, मगर किसी भी वजह से वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं करना चाहता,
तो क्या इन कोचिंग का, ट्रेनिंग का उसको कोई फायदा होगा? क्यों, एब्सोल्युटली। देखो, कोई भी चीज, कोई भी इल्म होता है ना, जाया नहीं होता है, कहीं ना कहीं यूज होता है। I have many I've trained many housewives who took my courses not because they wanted to practice, but they use those skills with their children. Great. Countless. Yeah. I've had many men who took my courses and they did not like practice anything anywhere, but अपनी job में, अपने business में they started using them. Right. Okay, so skills, this is a very powerful skill set. You can use them to become a better parent. You can use them to become a better human being, a better friend, better brother, better sister, better son, better daughter. You just like improving yourself. Okay, you don't have to become a professional. लेकिन अगर आपका, मेरी वाइफ जो है, she is an MBBS. आप रमजान मिले उनसे. She's an MBBS. Okay, she was a brilliant student, but she never practiced. But she's the home doctor. Okay. Every time it's like, घर में कोई भी होता है, मेरी family में कोई, it's like people call her, ask her. Right. Okay. So सर थोड़ा सा स्कोप के बारे में बताइए, कोचिंग ट्रेनिंग का स्कोप क्या है सर आजकल? It's huge. It's a very it's one of the fastest developing industry these days. Okay, a lot of people need coaches, professional coaches, qualified coaches, skilled coaches, because coaches जो है, it's like therapist नहीं होते. So not everyone needs a therapist, but people do need coaching. Okay, and people are looking for coaches. So the scope is very wide. So people can, there are financial coaches, there are health coaches, there are relationship. These are like different niches. There are relationship coaches. There are coaches for men. There are coaches for women. There are coaches for emotional issues. There are coaches for helping people with trauma. There are coaches for helping people with, managing their finances. There are coaching people for, coaches for people who have young, school-going kids. Coaches for people, parents who have teenage kids. So these are like specific niches. Right. Because people have challenges. आज के ज़माने में कौन है ऐसा जिसके पास challenges, like किसकी perfect life नहीं है मेरे अलावा? आपकी, रमजान की और मेरी, हम दो ही की हैं perfect. बाकी सब problems में ही हैं. इसीलिए हम दोनों practice कर रहे हैं. बिल्कुल समझते हैं. So अगला क्वेश्चन ये है कि सर आपसे जो भी शख्स ट्रेन होता है, कोच बनता है, चाहे वो मास्टर कोच हो, लाइफ कोच हो, तो क्या वो अपनी इन प्रैक्टिसेस को किन मेजर एरियाज में लोगों तक पहुंचा सकता है, या वो कौन से लोग हैं जो आपसे जो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो किन किन एरियाज के अंदर लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं, मेजर एरियाज? मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं जिन चीजों पे मेनली काम करता हूँ, आई वर्क ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, performance enhancement, dealing with emotional issues, changing habits, working with normal, healthy people. I am not a psychologist. I do not know anything about medicine. I do not work with psychologically disturbed patients. Okay, schizophrenia, bipolar disorder, clinical depression. I plainly, clearly refuse them. आप मेरी वेबसाइट पे अगर जाएं kamransultan.com पे, you will find मैंने red color से लिखा हुआ है, I'm not a psychologist. I am not trained. I'm not qualified to work with those people. So मेरे जो students होते हैं, they also learn things which I do. So helping people, improving their relationships, improving their performance, improving their emotional life, improving their mental state, improving their finances, improving any habit they have. कोई भी habit खत्म करनी हो, कोई नई habit develop करनी हो, getting more clarity in life, developing a vision, having more motivation in life, aligning your career and aligning your life, developing that, work-life balance, all of those things. वो issues जो normal healthy लोगों को होते हैं, किसी भी जिंदगी के एरिया के, उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं. ग्रेट, वंडरफुल सर. थोड़ा करियर के हवाले से बात करना चाहूंगा सर, कि अगर कोई शख्स कोचिंग की फील्ड में आता है
कोचिंग को, ट्रेनिंग को एज अ करियर चूज करता है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, क्या वो कर सकता है? Yes, in fact, those of you, for example, Ramzan, जब आपने start किया था, you were working in an organization for like 20 plus years. Okay, 25 you years. wanted to do, and I told you कि आप अपनी job के साथ इसको part time start करें. And this is what I tell everyone. This is when I said I made some mistakes. This is a mistake I made. Okay, this is what I did. मैंने क्या किया? I decided one fine day, okay, this is what I'm going to do, and I resigned from my job and jumped into this. I have no regrets about this. Alhamdulillah, ऐसा मुझे कोई regrets नहीं है. But मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई guide करने वाला नहीं था. I made my own decisions. My father had passed away. I did not have any role model to look up to. I was just making things, learning things on trial and error. As I said, उस ज़माने में लोग जानते भी नहीं थे. There were lots of people who were telling me that I am doing wrong. There were lots of people who were telling me कि ये चीजें काम नहीं करेंगी. There were lots of people who were telling me that I am thinking in the wrong direction and whatnot. But I made one mistake, and that was कि मैंने, I did not have, I had not created a buffer for myself. So उसकी वजह से I got into financial trouble in the first couple of years. So मैंने जब आप मेरे पास आए थे रमजान, and you said you want to do it, मैंने आपको भी क्या कहा था कि आओ and start doing it part time. Yes. So maybe do some extra work. You need to do hard work, and alhamdulillah you have done that. So you put in some extra hours every day. If not every day, do it every week. If you are off on Saturdays, Sundays, you start coaching sessions on Saturdays or on Sundays only. If you can't do it every Sunday, do it twice a month. But you start doing it and start getting some earning. जब आपकी earning यहाँ से इतनी हो कि आपके kitchen expenses निकल आते हैं, आपको पता है कि आपके kitchen expenses फर्ज करो 50,000 रुपए महीने के, and कि अब आप coaching से भी 50,000 रुपए कमा रहे हैं. So you don't need your job. तो फिर आप job छोड़कर and you can get into coaching, and कि मैं अगर if I do coaching full time तो मैं 50 के बजाय 5 लाख पे भी आ सकता हूँ. But अगर आप एकदम से job छोड़ देते हैं and आप इसमें आ जाते हैं, and then वो जो 50,000 रुपए आपकी आ रहे थे, तो फिर that becomes a problem. Okay, so that I don't suggest anyone to do that. बिल्कुल. सर, यहाँ पर अभी हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो करियर बनाने का सोच रहे हैं, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से मैंने जॉब से इस फील्ड के अंदर प्रॉपर्ली प्रोफेशनली मैंने कदम रखा. मैं तकरीबन 2017 में जब से मैं कामरान सर के साथ जुड़ा और फिर मुझे उनसे ट्रेनर और कोचिंग और प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर बनने का मौका मिला, मैंने क्या किया कि मैंने तकरीबन 3 बरस तक इसकी प्रैक्टिस मैंने वीकेंड्स पे करता था या मैं ऑफिस के बाद करता था, और मैंने 3 बरस तक ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के साथ सेशंस करना शुरू किए. उससे ये हुआ कि मेरी स्किल्स शार्प होती चली गई, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और लोग मुझे फ्री के सेशन के भी पैसे देने को तैयार हो जाते थे. मतलब जो कोर्सेज मैंने आपसे किए थे वो इतने हाईली वैल्यूएबल साबित हुए कि जब मैं लोगों को कहता था कि मैं उनको 2-2 घंटे देता था, एक सेशन के 2 घंटे जिस तरह हमने सीखा था, तो मैं उन लोगों को 2 घंटे का एक सेशन देता था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो अपनी जिंदगी में मैं उनकी इतनी वैल्यू ऐड कर पाता था. जिस चैलेंज के साथ आते थे, उस चैलेंज को सॉल्व करने के जिस तरह से मैं कोचिंग के टूल्स यूज करता था, एनएलपी यूज करता था, तो वो मुझे फ्री के सेशंस के भी मुझे पैसे देने को तैयार हो जाते थे. फिर जब कोविड आया तो कोविड के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, जहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जॉबलेस हो गए. मेरी अपनी सैलरी भी, जिस इदारे में मैं काम करता था, 20% सैलरी मेरी कट हो गई. तो मैंने उस कोविड के पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सैलरी से कई गुना मैंने ज्यादा अर्न करना शुरू कर दिया. और आज आलम यह है कि मैं 1 घंटे के 25,000 रुपीज चार्ज करता हूं, और सिर्फ चंद सेशन के अंदर कोई शख्स 4 सेशन साइन अप करता है, कोई शख्स 6 सेशन साइन अप करता है, कोई शख्स 10 सेशन साइन अप करता है. तो जितना मैं सैलरी में अर्न कर रहा था उससे अल्हम्दुलिल्लाह कई गुना ज्यादा मैं अर्न कर पाता हूँ. दूसरा, एक तो मुझे ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो गया. दूसरा, टाइम फ्रीडम इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी बरकत है, इतनी बड़ी रहमत है अल्लाह की,
कि मैं जब जॉब करता था, 25 बरस तक जॉब की है, वहां पर कोई टाइम नहीं होता था। सुबह मुझे 8:30 बजे पहुंचना होता था, रात को 8 से 9 बज जाते थे, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था और एडमिन की हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा वक्त वहां पर देना पड़ता था। तो अब जब मैंने कोचिंग को एज अ प्रोफेशन, ट्रेनिंग को एज अ प्रोफेशन बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे वक्त में अल्लाह की बड़ी रहमत है, बड़ी बरकत है। मैं रोजाना, जिस तरह आपने बताया कि आप अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करते हैं टाइम और मनी, मैं भी यही कर रहा होता हूँ सर, कि मैं जिन किताबों का किसी जमाने में सोचता था कि पढ़ा करूंगा, अब मुझे वो किताबें पढ़ने का मौका मिल जाता है। जो ट्रेनिंग्स मैंने आपसे हासिल की है, और इन ऑनलाइन और होम स्टडी कोर्स का कामरान सर सबसे बड़ा फायदा जो मुझे हुआ वो ये कि आपकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, पूरे पूरे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जो हम कई दफा उसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कभी कोई कोचिंग क्लाइंट आता है, तो उनका मैं एक शॉर्ट इंटरव्यू पहले करता हूं, जैसा कि आपने हमें सिखाया है। उस शॉर्ट इंटरव्यू को मैं एनालाइज करने के बाद अपने नोट्स को, आपकी स्लाइड्स को, आपके लेक्चर्स को रिव्यू करता हूं, और वहां से मुझे फाइंड आउट कर पाता हूं कि ये टूल उनके लिए बेहतर है या फला टूल उनके लिए बेहतर है। तो मुझे इतना वक्त मिल जाता है, मुझे किसी से लीव अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती है, बच्चों के साथ कहीं जाना होता है तो मैं बड़े खुशी से जा पाता हूँ। तीसरी जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो मुझे चॉइस फ्रीडम, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियल फ्रीडम आप हासिल कर पाएंगे इन इस फील्ड से, कोचिंग से, ट्रेनिंग से। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको हासिल होता है, चॉइस फ्रीडम हासिल होता है, टाइम फ्रीडम हासिल होता है। अक्सर जब मैं जॉब किया करता था, एक लिमिटेड सैलरी होती थी, तो अक्सर उस सैलरी की बुनियाद पर मुझे जो चीज चीप क्वालिटी की होती थी या जिनकी लो एंड प्रोडक्ट्स होती थी, मैं वही खरीदने पर मजबूर हो जाता था। समटाइम्स मुझे हेल्थ मेंटेन करने का बड़ा शौक था, मगर मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पाता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। स्विमिंग सीखने का शौक था, नहीं ज्वाइन कर पाता था, पैसे नहीं होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 25 वर्षों के अंदर जो चीज मैं सोचा करता था मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए नेसेसरी है और मेरी जिंदगी के लिए बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह सर इन पिछले 5 वर्षों के अंदर मैं बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं कर पाया था कर पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोचिंग एक इतनी जबरदस्त फील्ड है, ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त फील्ड है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, 1-to-1 बेसिस पर काम कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके सामने कोई भी क्लाइंट है, उसका रैंक जो भी हो, जैसे कामरान सर ने बताया कि उन्होंने आर्मी के जो बड़े पर्सनल हैं उनके साथ काम किया है, पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है। कल ही जो हमारा कोचिंग का ग्रुप है, कामरान सर गालिबन आपने देखा होगा कि आपका एक स्टूडेंट एक मिनिस्टर को कोच कर रहा है, हालांकि वो मिनिस्टर उससे एज में बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसके साथ कुछ सेशन साइन अप किए। तो आज आप में से जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये सोच रहे हैं कि कोचिंग को एज अ करियर फुल टाइम बनाएं या पार्ट टाइम बनाएं, मशवरा यही होगा कि आप पहले पार्ट टाइम बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें। तो कामरान सर ये तमाम चीजें और भी बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर अगर अभी हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनमें से बहुत से लोग, जब आपने पोल किया था तो उन्होंने हमें ये रिप्लाई किया था कि वो कोच और ट्रेनर दोनों बनना चाहते हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि सर उन्हें पहले कोच की फील्ड में जाना चाहिए, कोचिंग के कोर्सेज हासिल करना चाहिए, या पहले ट्रेनर बनना चाहिए? रमजान, मैंने जो पर्सनली पाथ फॉलो किया था, आई मैं वही सजेस्ट करता हूँ आपको भी, मैंने वही किया था। बिकम अ कोच फर्स्ट, ओके? बिकॉज राइट। जब आप एज अ कोच काम करते हैं, आपको एक तो आपका अपना कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपके पास लोगों से काम करने की स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं। फिर एज अ कोच ही जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप ग्रुप कोचिंग करते हैं, तो आपकी कुछ जो ट्रेनिंग की स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। पीपल स्टार्ट नोइंग यू, एंड once people start knowing you that you work as a coach, फिर वही लोग आपके पास आपके ट्रेनिंग सेशंस में आना शुरू होते हैं। ओके, सो
So आप किसी के साथ 1-to-1 कोचिंग कर रहे हैं, 1-to-1 कोचिंग से आप उनको ग्रुप कोचिंग के अंदर लाए, आपने किसी स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ग्रुप कोचिंग सेशंस किए, तो ग्रुप कोचिंग में यू डेवलप, यू ब्रश अप, एंड देन आगे आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किया। अगर आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में आते हैं, विच आई वुड नॉट सजेस्ट कि एकदम से ट्रेनिंग पे आए, यानी आप अगर फर्ज करो कि किसी ने एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग भी की है या हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, आई सजेस्ट पहले थोड़ा उसको प्रैक्टिस करो, गेट योर हैंड्स डर्टी, get your hands dirty before you start telling and teaching other people about that. It will help you. It will help you. Okay, कोई भी चीज आप जब उसको खुद आपने किया होगा और आपने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया होगा, give yourself maybe at least a year. That's what I did. I did my NLP practitioner, master practitioner training, and then I gave myself a year, and then I took my trainer's training. उसका so जब आप चीजें आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, एक साल बाय द वे यूं गुजर जाता है। देखो अभी आप कोविड की बात कर रहे थे, जी बिल्कुल, 2020, दिस इज 2023, एब्सोल्युटली, ओके। लगता है चंद दिन पहले ही लोग हर जगह कि कब खत्म होगा 2020, and see it's 2023. yes, so right. But if you give yourself some practice, spend some time, get your hands dirty, work with people, develop skills। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, रमजान यहाँ पे जो भी कुछ बता रहे हैं ना, all the benefits, रमजान has worked hard for this। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। मेरे जो कोर्सेज हैं, दे गिव यू अ गाइडलाइन, यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ, you have to do your part। Okay, I have coached Ramzan and told him and helped him do what he wanted to do, but Ramzan has done all the leg work, jisko aap bole, all the hard work। I have students who took many courses with me, didn't do anything, didn't get anything। बिल्कुल, okay, hard fact of life। बिल्कुल दुरुस्त है। so you have to do your part। इसीलिए मैंने आपसे कहा, you have to work hard, you have to be persistent, you have to be consistent, you have to be patient। बिल्कुल, you will find out। ये मेरे साथ हुआ पाकिस्तान में, जब मैं था बहुत साल पहले की बात, कोई मैंने अखबार में ऐड दिया इतना बड़ा, उस जमाने में मुझे याद है कोई 30,000 रुपए का ऐड होता था डॉन में, 2 कॉलम्स, 10 सेंटीमीटर 2 कॉलम साइज होता था। वो ऐड बनवाने के पहले पैसे दिए, फिर डॉन अखबार में वो ऐड दिया, उस ऐड के 30,000, कभी आप कहें जी वो मुझे पेज नंबर फलाने पे चाहिए, तो वो कहते इसके 50% एक्स्ट्रा होंगे, तो वो कोई 40,000 45,000 का ऐड बनता। ऐड दिया हमने अखबार में, उस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्ट्राइक कर दी, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया, और वो जो ऐड था उसके पैसे, सारे पैसे खत्म। यानी वो पैसे थे, वो ऐड था कि हमने दिया था, एंड वी वर लाइक एक्सपेक्टिंग कि इस ऐड से रिस्पॉन्स आएगा, एंड दैट वाज द ओनली मनी आई हैड एट दैट टाइम, और वो पैसा मैंने ऐड में लगा दिया, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ऐड अखबार में आएगा, उससे कुछ कॉल्स आएंगी, प्रोग्राम होगा, एंड देन वील गेट सम मनी। अगले मेरे महीने उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एंड देन पता चला जिस दिन ऐड आया उस दिन शहर में कुछ हंगामा हो गया, समथिंग हैपेंड, एंड रिस्पॉन्स वेंट डाउन टू 0। सो जो पैसे थे वो भी गए। इट हैपेंड मोर देन वंस एक्चुअली, सेवरल टाइम्स। जब मैं कराची के अंदर उस जमाने में होता था ऐसा। ओके, अल्लाह ताला टेस्ट करता है। मैंने इसीलिए आपसे कहा है, यू नीड टू हैव पेशेंस। yes, You will have those kind of setbacks at times। So ऐसा नहीं है रमजान आज कह रहे हैं like मुझे याद है रमजान ने जब शुरू में किया था, and then रमजान was so excited, सर मेरे $800 के मुझे किसी ने साइन अप किया, send him $800, and Ramzan was so excited। Okay, then couple of months later he did not have any clients। absolutely, okay, absolutely, the whole month was like a blank, not a single person signed up। But Ramzan did not stop, oh ji ab koi nahi aaya, yeah, because this is how it works। This is how it works, this is how it works। So जो अभी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं स्टूडेंट का, he sent me a message, he was asking me, I don't know if he's here or not, but we'll not mention his name, but those of you who are in the group, आप लोगों को पता है कि किसकी हम बात कर रहे हैं। So mashallah, he signed up a client, and he's signed up a politician, and then he sent me a message, said sir inke ye issues, and so tell me what to do। Okay, I said go and review your course material, it's all in there।
जो सारी चीजें आप जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, गो एंड वॉच दोस वीडियोस, यू हैव ऑल द आंसर्स। राइट। सो इससे पहले कि सर हम इसके रोड मैप की बात करें, क्योंकि दो फील्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं, कोचिंग की भी और ट्रेनिंग की भी, इसका एक रोड मैप भी है, क्योंकि जो लोग आप में से ट्रेनर्स या कोचेस बनना चाहते हैं, या दोनों बनना चाहते हैं, या एक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रोड मैप है हमारे पास, जो अभी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप तमाम से ये सवाल पूछता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि अब तक का जो भी सेशन आपने अटेंड किया, क्या वो आपके लिए मोस्ट रेलेवेंट था या नहीं था? अगर हाँ, तो आप अब चैट बॉक्स के अंदर 4 का डिजिट टाइप करें। क्या आप जिस मकसद के लिए आज आप आए थे, क्या वो पूरा हो रहा है? और आपको लगता है कि हाँ, यही चीज है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हमारे सामने है, और यहां से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइप 4। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग उन्हें 4 का डिजिट टाइप किया है। तो यहाँ पर कामरान सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जो ट्रेनिंग्स होम स्टडी कोर्सेज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, अगर एक शख्स कोच बनना चाहता है, जैसे आपने रेकमेंड भी किया कि अपने लाइफ की इस न्यू जर्नी को, इस न्यू प्रोफेशन को कोच से शुरू करें, तो कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोचिंग का कोई भी नॉलेज इस वक्त नहीं है, मगर माइंडसेट है कि हाँ उसे कोच बनना है, तो सर उसको सबसे पहले आप अपने कोर्सेज में से क्या रेकमेंड करें? देखो, 3 तरह के लोग हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं who are like still in the process of exploring, they're not decided कि मैंने ये coaching करनी है नहीं करनी, okay, they have no idea, राइट। मगर they have some hallucinations and they have some information but they don't have really any experience. तो इस तरह के लोगों के लिए जो मेरे जो बूट कैंप्स हैं, बूट कैंप्स जो होते हैं ये इंट्रोडक्टरी लेवल प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। ओके। तो हमने जैसे पिछले महीनों में बूट कैंप्स किए थे, तो बूट कैंप है, सो आई हैव एनएलपी कोच बूट कैंप, ओके। दिस इज अ प्रोग्राम, 3 दिन का प्रोग्राम है, okay, within 3 days anyone can go through those things and then decide, okay, this is something I want to continue or not. मगर जो उनका decision होगा, it will be based on information and understanding, a deeper understanding of the field and information. It will not be based on some weird ideas, incomplete information. So that's the thing. दूसरे कुछ लोग ऐसे होंगे जो already they have made up their mind कि हाँ, this is what I want to do, I want to become a coach. उनके लिए फिर we have like NLP coach certification training. Now तीसरे कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा, by the way, let's say, so तीसरे जो लोग होंगे, तीसरे वो लोग होंगे who are already coaches, who have some like कहीं पे उन्होंने इधर उधर कोई coaching किया था, but still feel there is something missing and they want to get to the next level. So we have Master Life Coach certification. So it's like coaching boot camp, NLP coach, and then Master Life Coach. Okay. So बूट कैंप के बाद वो काफी हद तक फैसला कर पाएगा कि उसे अगले लेडर पर जाने के लिए एनएलपी लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ले। सर, एनएलपी लाइफ कोच और मास्टर कोच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। And it's like basic and advanced. जैसे मैंने कहा, मेरे हर कोर्स जो है, it is based on NLP. Okay. So NLP coach certification training, that's 1 month long program. Right. Master Life Coach is 3 months long program. NLP coach uski jo duration hai program ki, including bonuses, that's 51, 52 hours. Right. NLP Life Coach, jo Master Life Coach jo training hai, it's more than twice of that. Okay, it's like I think about 120, 140 hours के करीब उसकी है. In fact, 160 hours with the bonuses. Okay. So that's the big difference. Fine. So मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू कर दूं एक दफा फिर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कि अभी जो डिस्कशन हुआ है, और अगर आप इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नए हैं, आपको कोचिंग की फील्ड का सिर्फ ये मालूम है कि कोचिंग की फील्ड होती है, मगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको रेकमेंड करेंगे
कि कामरान सुल्तान सर का एक होम स्टडी कोर्स है। अभी मैं और भी उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो सब आपको अभी मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप कोचिंग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से क्लाइंट को बनाया जाता है, तो आप बूट कैंप कर सकते हैं। बूट कैंप के अंदर साइन अप कर सकते हैं, जो कि होम स्टडी कोर्स है और 3 सेशंस में है, यानी कि 3 दिन का ये कोर्स था। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगले लेवल पर जाना है, यानी एक फुल फ्लैज लाइफ कोच बनना। तो इसके लिए जो सेकंड ट्रेनिंग आपके लिए अवेलेबल है वो है एनएलपी लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, जो कि तकरीबन 1 महीने के अंदर आप इसको पूरा कर पाएंगे। और आप में से वो लोग जो कहीं से भी कोच बन चुके हैं, कहीं से भी सर्टिफाइड कोच हैं, और वो अपनी स्किल्स को मास्टर लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो मास्टर लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला रोड मैप है उन लोगों के लिए जो कोच बनना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी, कामरान सर, चूंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कोच नहीं बनना चाहते हैं, वो सिर्फ ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो ट्रेनर के लिए आपके पास सर क्या रोड मैप देना चाहेंगे उसे सर, जो आपके पास अवेलेबल भी है इस वक्त? So trainer में दो possibilities हैं. You know, it's like you can become a hypnosis trainer. So I have my hypnosis practitioner course. You learn hypnosis and then you become a trainer of hypnosis. Okay, so जो course है उसका नाम है charismatic trainers training, जो रमजान ने भी अटेंड किया था. There are several other people I saw जो इस वक्त यहाँ पर हैं. So उसी कोर्स को के अंदर if somebody says जी मैंने hypnosis का trainer नहीं बनना, I just want to develop my training skills, I'm already a corporate trainer, I want to improve my training skills or I want to design my own courses, so charismatic trainers training as a standalone course पे आप ले सकते हैं. Standalone course का मतलब है कि अगर you want to learn to design your own courses, you will उसमें you will learn this, you will learn platform skills, presentation skills, the key skills for a trainer. You will learn to design your courses, you will learn to market your courses, conduct your courses, including all the logistics. जब class आप teach कर रहे होते हैं, even how you set up a classroom. Right. There is science behind that. There is psychology involved in that. There are lots of things involved in that. Okay, the kind of setup you use, उसका effect आपके students के ऊपर. अगर आप online sessions कर रहे हैं, there is so much in that. So जो एक charismatic trainers training है, that is you can take that as a standalone course and learn and your all the relevant skills that you need to become a successful trainer. If you want to become a trainer of hypnosis, then you can take charismatic trainers training with hypnosis practitioner training. उसमें एक चीज ये है कि hypnosis practitioner training में you get the hypnosis का जो course as a free bonus, and that's a program which I have personally trained, taught for over 20 years. I've trained thousands of people in that. So it's like this. अगर first करो कि somebody says कि जी I've become a chef, now मैं अपना restaurant खोलना चाहता हूँ, okay, अपनी chicken बनाएंगे. और एक शेफ जो है वो भी शेफ है, उसने कुकिंग सीख लिया, उसको आता है, बट उसको KFC वाले कहते हैं ये हमारी रेसिपी है एंड दिस इज व्हाट, और ये पिज्जा हट वाले कहते हैं ये हमारी रेसिपी है एंड यूज दिस एंड यूज आवर नेम विद दिस. ओके ओके, do you realize क्या डिफरेंस होगा दोनों के इसमें? यस यस. So when someone becomes a hypnosis trainer, I am giving them my course as it is, as I have taught it. And I teach how to teach that course, right, every element of that course. So right, people can actually literally duplicate that. They don't have to spend time in designing their own course. They have a course which I designed and I have taught, and alhamdulillah, my students are teaching as well. Okay? उसमें फिर आप अपनी तरफ से थोड़ी बहुत adjustment करना चाहें, change करना चाहें, I have no problem with that. But right, I'm giving you that. Okay, okay, sure, sure. So एक दफा फिर मैं अपने पार्टिसिपेंट में लोगों को ऑफर कर पाया हूँ. इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेनर बनेंगे इंशाल्लाह. मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज के दौर में जहां पर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है
कि आपको अपना कोई भी कोर्स डिजाइन करने में एक दफा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप वो ट्रेनिंग जूम पर कंडक्ट कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और नेक्स्ट टाइम आपने बजाते खुद लाइव जाकर ट्रेनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी एक पैसिव इनकम बन जाएगी। आप अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी ऑफर कर सकते हैं लोगों को, आप अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को भी सेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने सर ये जो 3-4 मरतबा अपने कोर्सेज रन करवाए, आप यकीन करें कि जितने पार्टिसिपेंट्स ने लाइव ट्रेनिंग अटेंड की है उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने वो ट्रेनिंग की प्रोडक्ट बाय की है, जहां पर मुझे लाइव होने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह कामरान सर की भी जो होम स्टडी कोर्सेज हैं वो भी किसी जमाने में लाइव ही हो चुके हैं, मगर इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि आज आप वो होम स्टडी कोर्सेज अपने पेस पर सीख सकते हैं, अपने घर पर सीख सकते हैं। जब भी आपके पास स्पेयर टाइम होता है, आप अपना कोई भी पार्टनर बना के उन ट्रेनिंग्स को घर बैठे रिव्यू करके सर्टिफाइड ट्रेनर और सर्टिफाइड लाइफ कोच भी बन सकते हैं। तो कामरान सर, आपकी इजाजत हो तो अब मैं अपने अगले सेशन की जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि जितने लोग इस वक्त कमिटेड हैं ट्रेनर बनने के लिए, कोच बनने के लिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर भी है, बहुत ही आउटरेजियस ऑफर भी है। मगर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से वो तमाम लोग जो 100% कमिटेड हैं, जो 100% कमिटेड हैं, कि अभी तक जो भी चीज उन्हें हासिल हुई है, जो इंफॉर्मेशन कामरान सर ने आपको दी है, वो आपके लिए हाईली रेलेवेंट है, और आप उस ट्रेनिंग के लिए, उस ट्रेनिंग को एनरोल करने के लिए 100% कमिटेड है। अगर आप कमिटेड हैं तो प्लीज टाइप 5 इन योर चैट बॉक्स, ताकि मैं उनके बारे में मजीद डिटेल आपको बता सकूं, और उनके लिए जो बोनसेस हैं, बहुत सारे फ्री बोनसेस भी आज कामरान सर ने आपके लिए दिए हुए हैं, और बहुत रिड्यूस करके। कामरान सर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत हाई एंड है, मगर आप में से वो लोग जो अभी 100% कमिटेड हैं उनके लिए एक आउटरेजियस ऑफर है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कामरान से काफी लोगों ने कहा है कि वो कमिटेड हैं और वो इस कोर्स को हासिल करना चाहते हैं, लाइफ कोच या ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको और भी बहुत ही ब्रीफली इंफॉर्मेशन दूंगा, अदरवाइज आप कामरान सर की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स इसकी हासिल कर सकते हैं। आप में से वो तमाम अफराद जो इंफॉर्मेशन की खातिर आज के इस सेशन में एनरोल हुए थे और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना है, या उनका आज का मकसद पूरा हो गया है, अगर आप जाना चाहें तो बेशक आप जा सकते हैं। हम आपका टाइम की वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं। इस वक्त वही शख्स मेरे साथ जुड़ा रहे जो कोचिंग या ट्रेनिंग को अपना करियर, अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम करियर बनाना चाहता है, और इसको हासिल करके सीखना चाहता है, और अपनी जिंदगी भी बेहतर करना चाहता है, और लोगों की भी जिंदगी को बेहतर करने की स्किल्स और टूल्स हासिल करना चाहता है। सो मैं अभी आपके साथ, अभी कामरान सर ने जो 2 रोड मैप्स बताए, बूट कैंप, एनएलपी, लाइफ कोच और मास्टर कोच, पहले मैं इन तीनों के बारे में बहुत ही ब्रीफली बता दूंगा, इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में और इनकी ऑफर्स के बारे में, और उसके बाद ट्रेनर्स ट्रेनिंग के बारे में मैं आपसे बात करूँ। And Ramzan, उससे तो पहले इस पर आए, let me share something with you. जी सर। रमजान ने भी आपसे बात करी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज आप करते हैं, then it becomes a source of passive income for you. Okay, मैंने अपना जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, that was in 2000. Okay, and I'm sharing that just start this program के आपके साथ. Assalamualaikum. We are Kamran Sultan and you're about to learn what hypnosis is. You're about to learn how to hypnotize people. You're about to learn different ways of hypnotizing people. Okay, by the way, this is me. Okay, and these are some of the books that I had read at that time, until that time. Okay. And some of the courses, but what I am showing you, ये जो program है, ये मैंने program record किया था. This was in 2002, 2001.
And I have sold this program, hundreds of these to people, okay, in CDs. Then I stopped selling this program, okay, and उस ज़माने में मैंने इसकी जो fees थी, I don't remember exactly, but around 2,000-2,500 रुपए मैंने इसकी बेच रखी थी. It was on CDs, okay, and I've sold hundreds of these programs. So जो अभी रमजान ने आपसे बात की थी ना, so once you learn how to design a training, you create your own training, you have to work hard. You design a course, you develop a course, and then you market it. मैं जो भी कुछ आपको सिखा रहा हूँ वो थियरी नहीं है. मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ थियरी नहीं है. वो चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से सीखी है. And things I know work in Pakistan. हमारे पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में जो काम करती हैं चीजें, मैं वो चीजें सिखा रहा हूँ आपको. Okay, so Ramzan, you can continue. Yeah, sure. हैं अदरवाइज आप जाना चाहें तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम जो आपने शेयर किया. आई एम श्योर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी और आज से एक नए करियर के बारे में, नई जिंदगी के बारे में और नए प्रोफेशन के बारे में आप सोचना शुरू कर सकते हैं. और जो लोग फाइनेंशियली कमिटेड है 100%, वो 24 आवर्स से पहले एनरोल करके अपनी इमीडिएट लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कामरान सर इस वक्त आपके लिए अवेलेबल. कुछ लोगों ने चैट में क्वेश्चंस डाले थे, सो अगर आप अपने क्वेश्चन क्योंकि ऊपर चला गया है तो या तो अगर आप दोबारा से इसको जिसने भी डाले थे, इफ यू कैन पोर्ट रीटाइप इट या कॉपी पेस्ट कर दें, सो वो नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह. आई विल आंसर दैट इफ यू हैव दोस क्वेश्चंस स्टिल. And if you want, you can raise your digital hand. We can take you online and answer your questions. हम टाइम से वैसे थोड़ा सा ज्यादा 2 घंटे हो गए हमने. बिल्कुल थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ था तो सर कोई इश्यू नहीं है. Okay. So, G. Alina. And if you come online, please turn your camera on. I like to look at people when I talk to them. I'm visual. G. Alina, you can unmute yourself. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. एक सवाल तो मैं पूछना चाहूंगी सर्टिफिकेशन के हवाले से और आपकी नॉलेज भी मिलाना चाहूंगी कि मैं यूरोप बेस्ड हूँ, पाकिस्तानी नेशनल, उर्दू स्पीकिंग, या तो दुबई में होती हूँ या इटली में होती हूँ. तो मुझे अगर जैसे किसी भी होटल में या किसी भी जगह पे कोई सर्टिफिकेशन करवानी है तो मुझे हमेशा सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल देखनी पड़ती है. तो एक तो मैं आपकी नॉलेज में ये बात लाना चाहूंगी कि मुझे काफी दफा ये हुआ कि पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे हर सर्टिफिकेशन में चीज देखनी चाहिए कि इंटरनेशनल है कि या नहीं है. दूसरा सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं या किस पॉइंट पे सर अनम्यूट सर आपका माइक म्यूट है सर. Oh, can you just slow down, relax? Yeah. Okay. अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँ. Let me answer first question. जी. Okay, relax. What is international certification? Tell me. सर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सर्टिफिकेशन जो कि यूरोप या दुबई में कहीं भी इंटरनेशनल दुनिया में एक्सेप्टेबल हो. And how do you find that कि वो इंटरनेशनल है या नहीं है? सर जैसे अगर NGH की कोई चीज है तो वो इंटरनेशनल हो, या वो अमेरिकन किसी What is इंस्टीट्यूट में. NGH? What is NGH? ये हिप्नोसिस की बॉडी है USA में. Okay, and that's what you think? जी सर. Okay. As far as international certification is concerned, in Dubai they have laws. More than certification, you need licenses. दुबई में अगर आपने आपने जूते पॉलिश करने का भी कोई काम करता है, तो then they need a license for that. Okay, and that's how the Middle East works. In Europe, you need certificates. अगर किसी चीज के लिए, that will vary from country to country. Even here in the US, it will vary from state to state. There is no such thing as international certificates. It's the law of that, where you're working. So even मैं जब पाकिस्तान में था,
और मैं हिप्नोसिस के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स वहां पर से देता था। तो उस वक्त मेरे स्टूडेंट्स, देयर वर सम स्टूडेंट्स हु इमिग्रेटेड टू यूएस, हु इमिग्रेटेड टू यूके, और उन्होंने इंग्लैंड में मेरे कोर्स की सर्टिफिकेट के बेसिस पे वहां पर ब्रिटिश हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन कुछ थी, आई डोंट रिमेम्बर, इट्स मेनी इयर्स, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन प्रॉबली 13-14 साल पहले की। दे अप्लाइड फॉर दैट, उन लोगों ने मुझे वहां से कांटेक्ट किया कि जीन साहब ने आपके सर्टिफिकेट का उस बेसिस पे हमारे पास अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए, do you know this person? And I just replied to them and they gave him certificates. This is when I was in Pakistan. Okay. Because is industry mein, this is not a regulated industry. NGH is a private business, not a government owned organization. Okay. And agar aap Google pe jaake search kare, there are hundreds of such businesses. तो ये जितनी भी certificates होते हैं इस industry में, these are certificates issued, these are, remember, certificates, these are not degrees, these are certificates issued by private businesses. So for example, मैं NLP के जो मेरे courses होते हैं, जो live online नहीं, जो मेरे live programs होते हैं, not the home study courses, उनकी certification Society of NLP से होती है. Society of NLP is owned by the founder of NLP, Dr. Richard Bandler. The certificate is signed in ink by the founder of NLP, but that's his private business. Richard Bandler is like any other American citizen. He doesn't have, because he's an NLP founder, he doesn't have some extra, citizen rights in America. He has the same rights in America like any other citizen. So these are all private businesses. आपको मेरे home study courses की जो certificates होती हैं, you get them from the First Institute of Dynamic Learning, which is an American business, registered here in the US, registered in New Jersey, and you get my institute certificate. If you want some other institute certificate, get their training. Okay, it's that simple. Okay, thank you, sir. Thank you. It's very clearing now. Sure. सर एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप जैसे आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, या आप को क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक इंसान को कब आप सजेस्ट करते हैं, या आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई उसको अब लाइफ कोच बनना चाहिए, उसको लाइफ कोचिंग करनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग whenever he or she is ready, देखिए, it will vary from person to person. I don't know you, I don't know if you're ready or not ready. There is no time when you're ready. If you're thinking of getting ready, you're never ready. Nobody's ready. I'm not ready right now to coach people, if I think in terms of ready, because how do you define what is ready? First करो, आपके घर में किसी को अचानक, अल्लाह ना करे, किसी को अचानक तबीयत खराब होती है, हार्ट अटैक होता है, ठीक है? And emergency में the only person you know is your next door neighbor जो अभी student है medical का. He is not a complete doctor. And you call him to see this person in your home, and वो कहता है नहीं, मैं नहीं देखता, I'm not ready. How would you feel? Do you think that he's right? नहीं, you take care of yourself. मैं नहीं देख सकता. मैंने तो अभी 5 साल की है जी, मैंने 4 साल एजुकेशन की, अभी मेरा 5वां साल पूरा नहीं हुआ. Do you think that would be the right thing? No, sir. Correct. But he's right. He's not ready. Stop buying into these crappy ideas. I'm now coaching you. Stop buying into these crappy ideas. These crappy ideas in your head will not let you do anything in your life. I'm not ready to get married. I'm not ready to have a child. What ready? It's like, this is, when you're thinking, I'm not ready, you are not thinking of your client, you're thinking of yourself. That's mean. Do you understand? Because जब वो कह रहा है ना कि जी मैं नहीं देख सकता, I'm not ready, he is actually being very, very, very selfish, because he's thinking about his reputation, his reputation, rather than of the client, the patient in front of him, and doing whatever he can do for him. That's a very, very, very mean idea, a very mean way of thinking. Stop doing that. If you operate with that mindset,
that mean mindset, you will never be able to do anything. Stop it. It's not going to help you. सर मुझे लगता है कि बहुत से लोग बहुत सतही लेवल पे बगैर जिंदगी की ड्राइव को लिए लाइफ कोचिंग करना चाहते हैं, तो मुझे दूसरों के हवाले से लगा कि ये क्या हो रहा है. Now here's the next thing. Alina, here's the next thing. I think you took one of my courses with me. Yes sir, hypnosis. Here's the next thing I'm telling you. Stop judging people. Because if you are judging people, you will do just like you will bring that same mind. मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहली चीज you have to learn is mindset. That's part of the mindset. So it's like with this mindset of judging people, मुझे ऐसा लगता है ये क्लाइंट जो मेरे पास आया ना, ये झूठ बोल रहा है, इसका ये असल में मसला नहीं है. मसला तो इसका वो है जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मेरी हेलुसिनेशन में है, वो नहीं है जो ये बता रहा है. तो लिहाजा मैं उसको वो हल दूं जो कि मेरी हेलुसिनेशन के मुताबिक है, वो नहीं जो वो मुझे बता रहा है. That's judging people. In NLP हम एक चीज कहते हैं, how you do one thing is how you do everything. Because if you're judging people, oh, they're doing it, they don't know anything, and you're judging them on those bases, you're judging other people in your life as well. You would have a lot of trouble with building relationships with people. You'd have a lot of people who get frustrated, angered with you, and your worry is like, मैं तो इतनी honestly बात कर रही थी. आप honestly बात नहीं कर रही थी, आप judge कर रही थी. By the way, those of you who want to understand coaching, what I'm doing right now is coaching. I'm being brutally honest with Alina. I'm not trying to be nice and kind with her, because that being nice and kind will not help her. This, doing this may not be something that she will feel comfortable with. She'll not be totally comfortable hearing what I'm saying right now. But when I'm working, and when you're working as a coach, your job is not to make, अरे नहीं देखे अलीना, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए. लोग जो है, ठीक है आप सही फरमा रही हैं, लोग इस तरह से करते हैं, उनको इस तरह नहीं. That wouldn't be helpful. She may like that, I agree with her mindset, but that is not going to help her. I have to point out exactly what she's doing. Okay, the other thing, Alina, आपकी से पहले भी क्योंकि मेरी conversation मेरे ख्याल से हुई है, you need to slow down. You make too many pictures in your head. You just too many and too fast. See too many movies in your head. A lot of times I've come across with people who have these kind of things. They find it really difficult to sleep at night. लेटते हैं सोने के लिए, नींद gone. Because that's how that's what they're doing with their brains. And then पता नहीं insomnia का problem हो गया. Thank you sir, thank you so much. Sure. Anyone else? A question here, does an introvert become a good I coach? am an introvert. I am an introvert. If you believe on those introvert and extrovert, it's like, here's another thing. Stop buying into these like labels. Okay. Somebody told you, gave you a label, and you just, बिल्कुल ठीक. ऐसा ही है exactly. ये बोले, चांद में आपका सितारा कौन सा है? मेरा मैं स्कॉर्पियो हूँ, मैं लियो हूँ, मैं सैजिटेरियस हूँ, and then they start believing it. Yours in some situations you have introvert tendencies, in others you have extrovert tendencies. Okay, in some situations you are very outgoing, very comfortable going and meeting people. In some situations you're like shy and laid back, and that's perfectly okay, because you're a human. Stop buying these labels, please. Sarish, that was your question. Right. Okay, and by the way, do you know, Imran Khan is an introvert. Whether you agree with his political thing or not, the fact that he has always been, throughout his life, he's been a public figure. He's an introvert. Sir, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. सर, अगर किसी ने NLP को नहीं जानता, तो वो आपको ट्रेनिंग कर सकते सर, जब आप कराने जा रहे हैं?
मैं कोई ट्रेनिंग नहीं कराने जा रहा हूँ, ओके हम खाली होम स्टडी कोर्सेज की आज बात कर रहे हैं, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करा रहा, ओके यानी कि और मेरी सॉरी आई एम सॉरी सर, एब्सोल्युटली जी जुल्फकार, अगर उस कोई किसी कोई एनएलपी नहीं जानता और कोई, दिस इज व्हाई दे आर डूइंग इट, बिकॉज मेरे जो कोर्स है इसमें फर्स्ट करो आप एनएलपी कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में आते हैं, तो आपको एनएलपी का जो बूट कैंप है यू गेट दैट, एंड दैट बूट कैंप will give you, equip you with necessary NLP skills. Okay, not practitioner level, but you will have sufficient information. और जो NLP coach certification training है, NLP coach certification training is, based on NLP. So you will learn everything you need to know to start working and helping people with that. यानी बेसिक लेवल की लर्निंग हो जाएगी सर। बिल्कुल। और अगर आप एडवांस उसमें जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, यू कैन गेट मास्टर लाइफ कोच, एंड आपने ऑलरेडी एनएलपी होम स्टडी कोर्स किया तो है यार। यस आया कुछ नहीं आया उस? नहीं सर, मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर अभी। ओके, थैंक यू सर। श्योर। एनीवन एल्स? सज्जाद नजर आ रहे हैं, कैमरा सज्जाद ने ऑन किया अचानक से। सज्जाद आप you can unmute yourself if you want. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला के एहसान है। और जैसे शुरू में गुफ्तगू हुई कि एवरी कोच नीड्स अ कोच, आप हमारे मेंटोर हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए हम हाजिर हो गए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सज्जाद ने मेरे पास काफी सारे को, सज्जाद इज बाय द वे मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी, ही इज एन एनएलपी ट्रेनर एज वेल। आपने कर ली ना सज्जाद एनएलपी ट्रेनर्स ट्रेनिंग? सज्जाद इज आल्सो hypnosis trainer. Sajjad has taken my NLP practitioner training, master practitioner training, life coach certification training. Sajjad has taken hypnosis trainers training, and recently he's also a body language master trainer of body language and micro expressions. And Sajjad is also, mashallah, an NLP trainer. Okay, he's in Hyderabad. Thank you, sir. So अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां, ढेर सारी खुशियां दे। रब करीम ने एक एहसान किया, और ये एक ऐसी बात है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे रमज़ान भाई ने कहा कि 2017 से उसने ज्वाइन किया सर को, तो मैं तमाम ऑडियंस जो अभी बैठे हैं पार्टिसिपेंट, उनको एक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी नेमत से नवाजा है, जिनको मैं जानता हूँ, जिन लोगों ने सर से किसी भी किस्म की कोई ट्रेनिंग या कोचिंग ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी ज़्यादातर दोस्तों से बातचीत होती रहती है और वो अपनी लाइफ में बड़े ही सेटिस्फाइड हैं। तो आपको मुबारक है कि आपको एक ऐसा मेंटोर मिला है, और खुशकिस्मत हैं आप लोग। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं जो इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल में इस कन्वर्सेशन से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह लाइफ के मसाइल को हल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे दोस्त आगे बढ़ेंगे, उनको एक मज़ा आता जाएगा और ज़िंदगी आसान और सहल होती हुई नज़र उनको आएगी। Thank you so much, sir. Thank you, Sajjad, and Jazakallah for your comments. So, anyone else wants to say something, ask something? Koi aur? See, quick question. I'm seeing number of people. Question Naimans, Hamid, Hajra, Sehrish, anyone who has any questions, any comments? You can raise your hands, or if you don't have any questions, anything, then we can call the session off. Thank you very much, everyone, for joining. Sajjad will, Ramzan will share जो slides उन्होंने आपको दिखाई थी discount वगैरह की, and we are not offering any live training at the moment. We do have home study courses, and you can sign up on those home study courses anytime you want, anytime you're ready. But right now, there's this discount जो रमजान ने आपको दिया है. If you are interested, you can do that. You can sign up for that and get started today.
So thank you very much everyone, and inshallah ताला जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.